Hi, this is Prashasti. Welcome back to my channel. As you may have read from the title already, आज का वीडियो होने वाला है जापान में इंग्लिश टीचिंग जॉब्स के बारे में. So if this is something that interests you, then keep on watching. But before we begin guys, make sure to give this video a thumbs up and also hit the subscribe button down there. तो बहुत से लोगों को इस बात का कंफ्यूजन होता है कि अगर वो एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर है तो क्या जापान में वो एक इंग्लिश टीचर का जॉब कर सकते हैं. तो इसका जवाब है जी, बिल्कुल कर सकते हैं. In fact, there's no such legally binding government law that states a non-Japanese can't teach English in Japan. So I hope that clears your doubt. अब नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स होते कौन है? तो ये वो लोग होते हैं जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है और ये यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, आयरलैंड जैसी कंट्रीज़ के सिटीज़न होते हैं. और फिर वो लोग जो इन कंट्रीज से बिलोंग नहीं करते हैं और जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती है, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इन्हें नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स माना जाता है. तो यहाँ जापान में भी इनकी फर्स्ट लैंग्वेज जापानीज़ है. तो नेचुरली ही यहाँ इंग्लिश टीचिंग जॉब्स की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है. इट्स ऑल्सो अ जॉब दैट पेज वेल एंड ऑफ कोर्स विल टॉक अबाउट द सैलरीज, but let's save that for later. So जापान में इंग्लिश टीचिंग जॉब्स दो तरह की होती है. The first one is ALT, which stands for Assistant Language Teacher. ये ऐसे टीचर्स होते हैं जिन्हें डायरेक्टली जापानीज गवर्नमेंट या प्रीफेक्चरल बोर्ड ऑफ एजुकेशन हायर कर सकती है और ये पब्लिक स्कूल्स, एलिमेंट्री स्कूल्स, जूनियर या सीनियर हाई स्कूल्स में काम करते हैं. इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कैन हायर देम वाया द JET प्रोग्राम. सेकेंड तरह की जॉब होती है एकाइवा गाको में. एकाइवाज आर बेसिकली इंग्लिश कॉन्वर्जेशन स्कूल्स इन जापान. इनमें जो टीचर्स होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं. तो यहाँ पे कंसेप्ट ऐसा होता है कि यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू अ जापानीज कंपनी. इसके लिए जापान में प्राइवेट डिस्पैच कंपनीज होती है. मैं नाम तो नहीं लूँगी उनका, बट स्टिल इनका काम होता है जापान से बाहर रहने वाले टीचर्स को हायर करना. नाउ हियर्स अ वर्ड ऑफ एडवाइस. There are a lot of dispatch companies all over Japan. तो इन dispatch companies में अप्लाई करने से पहले आप अपनी तरफ से थॉरो रिसर्च कीजिए, know the pros and cons and then only decide for yourself. एंड वन मोर थिंग, अगर आप जापान में पहली बार आने वाले हैं फॉर एन इंग्लिश टीचर जॉब तो कोशिश कीजिए कि आप रूरल एरियाज़ में ही अप्लाई करें, क्योंकि मेजर सिटीज़ जैसे टोक्यो, ओसाका, इसमें कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा होता है और एक्सपेंसेस भी. सो डू कीप दैट इन योर माइंड एंड जस्ट बी रेडी विथ योर फाइनेंसेस एंड बजट. So now let's talk about the standard requirements for an English teacher job in Japan. As a non-native English speaker, you need to have a bachelor's degree, a 4 years bachelor's degree from your home country. You also need a minimum 12 years of English education, transcript of records from your college or university. This one is really important, that is English language certifications like TESOL, TEFL, CELTA, DELTA, IELTS, TOEIC. These certificates will help your resume to stand out and also add value to it. Next up is work experience. Having teaching experience from your home country gives you an edge over all the other applicants. It's not mandatory of course, but if you're a non-native English speaker, then you gotta do everything in order to finesse your resume. Lastly and most importantly, you need to develop a near native or native level of fluency. Now this is something which is the most challenging part for a non-native English speaker. They seem to falter and struggle in terms of developing a native like accent. अच्छा, वन मोर थिंग, अगर आप जापान में इंग्लिश टीचर जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप उन सभी नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ compete करेंगे जो उस जॉब पोजीशन के लिए दुनिया भर से अप्लाई करने वाले हैं. ऐसे में यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ योर गेम बिकॉज एट द एंड इट्स ऑल अप टू यू. आपको ही जापानीज कंपनी के रिक्रूटर्स या ऑर्गेनाइजेशंस को प्रूव करना पड़ेगा. You'll have to give them a strong reason why you should be hired over a native English speaker. The final call will of course be up to them, but still,
If your interviewer believes that you can speak English well enough to teach it to others, then you could definitely land the job. अब इसके लिए आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी, एक्सेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द बेस्ट वे टू लर्न दैट इज़ कि आप खुद ही नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स के साथ बात करें, बिल्ड योर फ्लुएंसी, उनकी एक्सेंट को अडॉप्ट करें एंड जस्ट लर्न फ्रॉम देम। और इसके लिए आई हाईली रेकमेंड यू टू यूज़ दिस ऐप कॉल्ड कैमली, विच इज़ द ओनली ऐप इन इंडिया दैट प्रोवाइड्स 1-to-1 प्राइवेट इंग्लिश क्लासेस। और इनके जो ट्यूटर्स होते हैं दे आर फ्रॉम नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ लाइक द US, UK, कनाडा। ये ऐप खासकर उन लोगों के लिए यूज़फुल है जो इंग्लिश लिखना और पढ़ना तो जानते हैं लेकिन इंग्लिश बोलने में थोड़ा स्ट्रगल करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू मोर अबाउट इट, लेट मी जस्ट शो यू एन इंग्लिश स्पीकिंग सेशन दैट आई टुक सो दैट you get an overall idea about the app and how it works. So all you have to do is open this app in your mobile or web browser और वहाँ आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे जैसे बिजनेस इंग्लिश, प्रिपरेशन फॉर IELTS, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड नॉट जस्ट दैट बट यू ऑल्सो हैव एन ऑप्शन टू चूज अमongst द वाइड वेराइटी ऑफ ट्यूटर्स दैट दे ऑफर 24/7 and once you decide that you want to talk to a tutor, then you just have to press call. Hi there, how are you? Hello, I'm good. I remember when we were in school, we had one of my teachers had us do a little experiment. We had to go up to the top of the classroom and tell a story about ourselves, and she would tell us, she's counting how many times we say because it's a human instinct to keep attention when we're speaking. So one of our strongest instincts when we're speaking, in the pauses in between, we go or how to prevent that is very hard. I think it takes a very conscious effort when you're speaking. See, even I do it when I speak as well. When you're speaking, just focus on, when you pause, take a second and think. You don't have to make a noise or stammer. Take your time, be patient with yourself. So everyday practice, listening to English, speaking English, practice every single day. Don't be afraid to express yourself and, being yourself, be proud of everything you do, be proud of what you say, of who you are. It's a lot easier said than done, of course. But, yeah, I think, to believe in yourself, just have faith in what you're saying. Alright, so that was a great session with Cambly. अब मुझे इस ऐप का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगा कि Cambly के ट्यूटर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और फ्रेंडली होते हैं। तो मैं आपको यही टिप देना चाहूँगी कि whenever you talk to these tutors, please don't hesitate or feel shy, क्योंकि ये ट्यूटर्स आपको बिना जज किए आपके वीक एरियाज़ को सुधारते हैं और आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को फाइन ट्यून करने में आपकी पूरी मदद करते हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि आप ज़रूर जाके चेक कीजिए Cambly, और अगर आप मेरा कूपन कोड दैट इज़ प्रशस्ति यूज़ करते हैं तो you'll get a 25% off on a 3-month subscription. I will mention the code and the link in the description box below, so do go ahead and check that out. अब इंग्लिश के अलावा भी अगर आप जापान में जॉब करने आना चाहते हैं तो आई वुड रेकमेंड यू टू लर्न जापानीज लैंग्वेज एज वेल। अब आप ये पूछेंगे कि एक इंग्लिश टीचर जॉब के लिए जापानीज क्यों सीखनी पड़ेगी, तो इसका जवाब है कि जापान में बिना जापानीज सीखे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली इफ़ यू गेट द जॉब। आपके साथ जो आपके कोवर्कर्स रहेंगे वो जापानीज लोग होंगे, आप जिन बच्चों को सिखाएंगे वो भी जापानीज ही होंगे। ऐसे में in order to lessen the language barrier, to get along with your co-workers, create new bonds and interpersonal relationships, you must learn Japanese. इससे आपकी डेली लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी और आप जापानीज कल्चर में अच्छे से ब्लेंड भी कर पाएंगे। तो प्लीज़ जापान आने से पहले एक एलिमेंट्री लेवल ऑफ जापानीज ज़रूर सीखें, इतना कि आपको हिरंगाना और काटाकाना अच्छे से समझ में आए। बाकी कांजी और जो एडवांस लेवल जापानीज़ है वो तो आप यहाँ रह के बाद में सीख ही सकते हैं जापान में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो कि
बहुत ही लंबी चलती है, सो जस्ट बी पेशेंट विद इट। अच्छा, आई वुड लाइक टू मेंशन कि अगर आप जापान में आते हैं इंग्लिश टीचर के जॉब के लिए, देन योर जॉब विल ऑब्वियसली रिवॉल्व अराउंड बीइंग ऑल द लिटिल किड्स इन द स्कूल। सो ऑल द रिक्रूटर्स लुक फॉर पीपल विद अ वेरी जॉली एंड चीयरफुल पर्सनैलिटी। जापान में हम इसे कहते हैं गेंकी और सुपर गेंकी। गेंकी या फिर सुपर गेंकी मीन्स बीइंग वेरी वाइब्रेंट, पेपी, cheerful, energetic and full of life। तो आपके पूरे इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान आपको काफ़ी खुश मिजाज नज़र आना है, फुल ऑन एंथू दिखाना है। जस्ट रिमेंबर टू बी गेंकी। I completely forgot to mention this, but an average salary for an English teacher job in Japan starts from 2 lakh Japanese yen to around 3 lakh Japanese yen. Now sometimes you can even make more than that, but it all depends on your qualifications and your previous teaching experiences. Airfares and housing costs are not always included in it. However, there are certain schools that help you find accommodation and also provide you housing stipends depending on your credentials. And with that, I would like to say goodbye. I truly hope that I could be of some help in you achieving your personal goals. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, share, comment and subscribe to my channel. If you have any queries, DM me on Instagram. Don't forget to watch out the space for more such videos. I'll see you next time. Mata ne!